Mr. Sohail. He is the tallest person in the history of our clinic. He is having some back issues because of his height. He is having postural misalignment. Due to his height, he is sitting on the chair. He has some IT job. So when he sits for long hours, because of the sitting in the odd position, he is having postural misalignment. Due to the postural misalignment, if I just show his back, you can see his back is quite tall, and we can see clearly this is called postural scoliosis. We can mark his spine from the dorsal area to the lumbar area. The pelvis are imbalanced, and there is a postural scoliosis is there. So we are going to do one adjustment for him today. This is the first adjustment for him, and we will see then afterward how he will feel. Come please, right. Face down here. Are you comfortable or? So you can shift a bit down. Yes. In case you are having on the hand support, so then you will be more comfortable. Any pain here? So this is his L5. So L5 area is quite tender, and pain travels in the hip area also. नहीं उतना नहीं उतना नहीं. So you mainly feel pain here. ज़्यादा यहाँ पे रहता है दर्द. जी हाँ. ठीक. So first we will do the mechanical adjustment with the adjusting gun, because he is quite tall, his spine is quite broad. This is the mechanical adjustment gun, so we can do the adjustment with this. Relax your shoulders. अगर आप चाहो तो पीछे भी रख सकते हो, ज़रा कंफर्टेबल बैठ नहीं एक ठीक है. Just relax yourself, total relax. I'm going to do the upper back first. Yes, total relax. Okay. Yeah, loose your neck, loose. Yes, relax. More you'll keep it relaxed. It's very easy for me. Okay. Yeah. Relax your head. Loose. Don't make it tight. Loose. Yes. This is all postural misalignment. Though he has a pain only on the lower back. Loose. Breathe in. लंबा सांस लेके सांस बाहर निकालिए. हाँ, सांस को पूरा छोड़िए. इस शोल्डर को थोड़ा सा लूज रखिए. शोल्डर जितना रिलैक्स रखेंगे उतना ईजी है. यस.
लंबा सांस लीजिए, सांस को पूरा बाहर छोड़िए, शोल्डर रिलैक्स रखिए। यस, मेरी तरफ टर्न करिए। हाँ, मेरी तरफ करवट। यस, ठीक है, कैन गिव यू पिलो। नीचे वाला लेग स्ट्रेट करो। यस, बिल्कुल रिलैक्स रखो। आई जस्ट मेक द पोजीशन, कीप योरसेल्फ रिलैक्स, रिलैक्स। दर्द भी हो, बस जस्ट आपको ढीला छोड़ना है, ठीक है। आप ढीला रखोगे तो हो जाएगा। इसको एल्बो को पकड़ के, ठीक है, और इसको मेरी तरफ आने, मेरी तरफ आने। इसको रोकना नहीं आप, क्योंकि मैं मेरी हाइट कम है, मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाऊँ। ये नी को नीचे ले जाओ, बेड से और नीचे ले जाओ, और नीचे ले जाओ। नहीं गिरोगे नहीं आप, बिल्कुल नहीं गिरोगे। डोंट वरी। पैर को नीचे लेके जाओ, और नीचे लेके जाओ, और नीचे लेके, घुटने को और नीचे ले जाओ। नहीं गिरोगे, नहीं गिरोगे, आप नहीं गिरोगे, मैं बोल रहा हूँ। आप ढीला छोड़ोगे तभी हो। ये साइड से नहीं कर पाऊंगा, थोड़ा सा और नीचे आना। हाँ, ब्रीथ इन, लंबा सांस खींचो, सांस छोड़ो। बस आप डर रहे हो, डरो नहीं, टाइट नहीं करो। चलो उस तरफ करो, दोनों तरफ से ट्राई करो। इसमें जितना बॉडी को रिलैक्स रखोगे उतना ही मेरे लिए इजी होगा, और आपके लिए भी इजी होगा। टर्न करो। आपकी बिकॉज ऑफ योर हाइट ना हो तो बहुत आराम से, और थोड़ा सा आप रिलैक्स भी नहीं छोड़ रहे, थोड़ा अंडा देखो। इसको पकड़ो। फर्स्ट टाइम है ना, इसलिए। हाँ, नहीं गिरेगा कोई नहीं, गिरता कोई नहीं, हम आगे खड़े हैं ना इसलिए। अब इसको आप नीचे जाए, क्योंकि वहाँ से मैं नहीं कर पाऊंगा। इसको जितना नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और नीचे। हाँ, ठीक है, इसको रिलैक्स छोड़ना है आपने। अब इसको अगर होल्ड कर लोगे तो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसको ढीला छोड़ दो, हाथ को पकड़ के रखो, ये आपकी ग्रिप है। यस, ब्रीथ इन, लंबा सांस लेके अपने बॉडी को ढीला छोड़ना है। वेरी गुड, सांस लेके, हाँ, ढीला छोड़ो। होल्ड कर लेते हो। आप क्या कर रहे हो? When I'm trying to give you a turn, आप एकदम से होल्ड कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या अजीब सा लग रहा है। हाँ, सीधे लेटो, 1 मिनट सीधे लेटो, रिलैक्स करो। आपको गिरने का डर लग रहा है, क्या लग रहा है? नहीं, दम हो रहा है, इसलिए वो थोड़ा बॉडी टाइप हो जाएगी एकदम से। बिल्कुल फील हो रहा है ना वो एक चीज, इसलिए। हाँ, सीधा। हाँ, सीधे लेटो। लूज। 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 अभी आपने बॉडी ढीला छोड़ा हुआ है तो वेरी इजी। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एक बार उठ के चलिए, थोड़ा सा थोड़ी टेबल पे लेटा। क्या कुछ हुआ है? चलो वॉक करो, बॉडी को बिल्कुल लूज छोड़ दो, रिलैक्स। हाँ, ऐसे वॉक इन, वॉक आउट।
एक बार फॉरवर्ड बेंड करके देखना, नीचे तक नीचे। हाँ कितना बिना सारे के शायद इतने। ठीक हाँ इधर है करवट से थोड़ा चौड़ा टेबल इसके एक बार साइड से लेटाएगा वैसे ही मेरी तरफ करवट लेके एक बार बस लेट जाओ मतलब कमर में फेस मेरी तरफ करके जैसे साइड से लेट रहे हैं ऐसे ठीक है ये कंफर्टेबल है हाँ ये ये सही उतना नीचे में और आ गया और आ गया और आ गया बस ये वाले पैर को पीछे कर लो बस मैं बना ली पोजीशन हाँ ये जो ऐसे पकड़ना इसको कमर को नीचे छोड़ दो घुटने को नीचे जाने दो बेड से मैंने ये पकड़ा हुआ है आपको ठीक और इसको नीचे जाने दो नीच को नीचे ले लो नी को नीचे ले लो और नीचे हाँ और नीचे ले लो। कंधे में शोल्डर में कौन से शोल्डर ये दबा दो ये जो दबा है। रिलैक्स ठीक है हाथ पकड़ लो अब आपने सांस लेना है सांस छोड़ना बॉडी को बिल्कुल जैसे ढीला छोड़ दो जितना ढीला छोड़ दो उतना आराम से हो जाएगा सांस लेके लंबा सांस लेके सांस छोड़ दो आराम आराम सांस लेके हाँ सांस छोड़ दो हाँ सीधा वॉक उल्टा लेटे बहुत इजी नहीं, यूट्यूब पे वाकई में बहुत इजी लगता है।